Good morning to you all. Good morning, sir. Good morning, sir. Yes, good morning. Just wait for a minute. So Good morning. yes, yesterday we have seen this example of synchronous counter and what synchronous counter is. We have seen yesterday. Okay, so let me share that PDF. Okay. Good morning, sir. Yes, good morning. So, are you able to see the PDF? Yes, sir. Yes. Okay. So yesterday we have discussed the steps that how we can design a flip-flop, and I think all of you have gone through that. If you have not understood the video what I have uploaded in the Google on YouTube. So today we will go through some another type of counters. So in synchronous counter, we have seen the basic synchronous counter as a 4-bit synchronous counter. Okay, so as it is a 4-bit synchronous counter, so it can count up to 15. Okay, so we have already seen that the counter which is shown over here is got through uh, got through these using these steps. Okay, so where is that? Okay, this is the mode 6 counter design. Design is we have designed this. We have seen the how we can design the mode 6 counter using those steps which we have discussed yesterday. Okay, so in the same way, we can design another synchronous flip-flops, synchronous counters as well. Okay, so 10 counter also known as decade counter. Decade means 10. Okay, 10. So 10 states will be there. So today see some another type of flip-flops as another type of counter as Johnson counter. Okay, so I think this is somewhat hazy, but the text is clear, I think. सब ब्लर है थोड़ा ब्लर है बट आई थिंक टेक्स्ट इज क्लियर टेक्स्ट आप लोगों को दिख रहा है यस सर क्लियर थोड़ा ब्लर है सो it is a Johnson counter or twisted ring counter. So many names of this counter are there. Switch tail ring counter, Mobius counter, creeping counter, or shift counter. Okay. So what you can observe here. So from this picture, what you can observe, what you are observing. Sir, clock सब में same है? Yes, clock is same. So as it is a synchronous type of synchronous counter, okay. So this clock is representing, this clock is showing that it is a synchronous counter. What is the another thing which you are observing? So which type of flip-flop is used here? D flip-flop.
Yes, here D flip-flop is used. So what is D flip-flop? Do you all know? Sir, don't care. No, this is not don't care. Anybody else? सर नॉट गेट लगा देते थे बस पहले. Yes, yes, yes. So, okay, I am just showing you that what is a D flip-flop. So as we have seen in JK flip-flop, the configuration was like this. So in JK flip-flop, we have two inputs as J and K, and we have two outputs as Q and Q bar. Okay. Bar. This is a JK flip-flop, and in this JK flip-flop is if instead of giving the different inputs as J and K, if we complement the input with respect to another input. Okay, so what you can see here, that we are providing the input at J and K, which are the complement of each other. As we have introduced an inverter here, यहाँ पर हमने क्या लगाया है, एक नॉट गेट लगाया है. हाँ, इस नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी बोलते हैं. ओके, सो here instead of giving the J and K inputs, different inputs, we are giving only one input, which is the D input, and if we are putting D is equal to 1, then at J we will have 1 and at K we will have 0. Why? 0. Because a NOT gate is introduced over here. Okay. So when we make the truth table of JK flip-flop, then what we can observe, that we have four possible combinations: 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1. 1 1. So for 0 0 we have the no change. For 0 1 we have 0. Reset. For 1 0 we have 1. And for 1 1 we have UN plus 1. complement. Okay, so what you can observe here at the flip-flop in the D flip-flop, in the D flip-flop you can see here that the values of J and K will only be limited to 0 and 1 only, that is these two cases. Can you observe that? So in D flip-flop we can give only this possibility, isn't it? In D flip-flop, we can use only this much. क्यों? क्योंकि जो इनपुट होगा वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि हमारे पास दो ही इनपुट है, तो या तो 0 1 होगा या 1 0 हो सकता है. ठीक है ना, यही पॉसिबल दो कॉम्बिनेशंस हो सकता है. तो बेस्ड अपॉन दैट, what we can observe here, that we already know that in JK flip-flop, if J is 0 and K is 1, the next state will be 0, and if J is 1 and K is 0, in that case the output or the next state will be 1. Okay, so what we can see here, that if we will put, now we can draw the truth table for D flip-flop. So in D flip-flop, what we can see, that we can put either we can put D is equal to 0 or we can put D is equal to 1. Okay, so as we have seen that when we will put D is equal to 1, then what happened? J is equal to 1 and K is equal to 0 hoga. Okay, so in that case, what should be the next state? The next state will be equal to 1. Okay, because in the case when J is equal to 1 and K is equal to 0, the next state will be equal to 1. Okay, so this is the case. When D is equal to 1, the next state will be equal to 1. On the other hand, if we will put, if we will put D is equal to 0, then what will happen? If we will put D is equal to 0, then J is equal to 0 and K is equal to 1, isn't it? Yes, sir. So for this case, what should be the next state? 0. Should be a 0. Okay,
So for d is equal to 0, we are getting the next state is equal to 0. So what you can see here, that whatever the input we are applying in case of D flip-flop, we are getting the same output as the next state. Okay. So in this case, what is happening, that we are getting the same output when we are applying the input. So we can assume it as a delay in the output. Okay, so we are applying an input and we are getting the same output after some time, and that time is known as the propagation delay time. Okay, so इस propagation delay time के बाद हमें वही same output मिल रहा है, so that is why this is known as a delay flip flop. Okay, so previously what we have seen, प्रीवियसली जो हमने फ्लिप फ्लॉप में जो हमने देखा, क्या देखा था लास्ट डे हमने क्या देखा था? लास्ट डे हमने एक मोड 6 काउंटर देखा था, और उस मोड 6 काउंटर में हमने जेके फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल किया था, और उस जेके फ्लिप फ्लॉप में हमने किया क्या था? ट्रूथ टेबल बनाए थे और की मैप। ओके, सो इसमें हमने किया क्या था, एक ही इनपुट सारे फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई किया गया था और दोनों ही में 1 1 अप्लाई किया गया था। ओके, सॉरी, जे और के का जो वैल्यू था, हमने यहाँ 1 VCC ऑलरेडी 5 वोल्ट देकर रखा था, ठीक है, प्लस 5 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या था कि जे और के का जो इनपुट था वो क्या था, जे के इनपुट ऑल आर 1 1। सो जब जे के इनपुट दोनों शॉर्टेड होता है तब हम उसे कौन सा फ्लिप फ्लॉप कहते हैं? मैंने क्या कहा? दिस इज द जेके फ्लिप फ्लॉप, और इस जेके फ्लिप फ्लॉप के दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर दिया जाए तो इससे जो फ्लिप फ्लॉप मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? टी फ्लिप फ्लॉप। ओके, अगर कॉम्प्लीमेंट करके इनपुट दिया जाए देन इट इज नोन एज डी फ्लिप फ्लॉप, और अगर शॉर्ट कर दिया जाए तो वो टी फ्लिप फ्लॉप कहेंगे हम उसे। सर, तो इस केस में क्या होगा, when t is equal to 0, what will happen? Both j and k will become 0. So what is the next state when j and k both are 0 0? Present state, sir. That is qn. Okay, and when t is equal to 1, then what will happen? Then j is equal to 1 and k is equal to 1. So in that case, what should be the output? 1 complement of present. It should be 0. It is complement of the present state. ये जीरो हम नहीं बोल सकते हैं, जीरो हम तब बोलेंगे जब हमें पता होगा प्रेजेंट स्टेट क्या है। सो वी आर जस्ट नोटिफाइंग दैट प्रेजेंट स्टेट विथ Qn. So this present state may be 0 or 1. Okay, so this complement of Qn means what? Complement of the present state. Okay, so we are showing the complement of the present state. So here we are using a D flip flop. Okay, so and in D flip flop we already know that there will be whatever input we will apply, we will get the same output at the flip flop output. Okay, we will get the same output whatever is the input is applied. Okay, now we can see that what is this, what type of flip flop is this? So sorry, yes, we are going through the counter. So here what we can see, okay, so this counter is similar to standard ring counter. So we will also see the ring counter. Okay, what is that? We will see, except that the inverted output of the last flip flop is connected to the input of the first flip flop. Okay, I am also showing you the figure for the ring counter. Are you able to see this? Yes, sir. So what you can see here,
Here you can see that same D flip-flop is used, but what is the difference? What is the difference between that Johnson counter and in this सर counter? इसमें क्यू बार से लिया गया था इनपुट, इधर क्यू नॉट से लिया गया है. Yes. तो यहाँ पर जो फीडबैक दिया गया है वो अनकॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट पर है, और जॉनसन काउंटर में जो आउटपुट लिया गया है वो कॉम्प्लीमेंटेड वाले टर्मिनल से है, कॉम्प्लीमेंट आउटपुट वाले टर्मिनल से. ओके, सो ओनली दिस मच ऑफ डिफरेंस इज देयर. So the counter is similar to standard ring counter, except that the inverted output of the last flip-flop is converted to the input of the first flip-flop. Okay, so here जब हम यहाँ पर inputs apply करेंगे तो after that हर एक clock pulse के बाद हमें जो output मिलेगा that is denoted over here. Okay, so here you can see that we have a clock periods 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, these are the clocks. And there is a change in the there is a shift in the output. So at initial state, let us assume that the outputs are as the outputs are 0, 0, 0 and 0. Okay, इनिशियली हम मान रहे हैं कि ये सारा आउटपुट्स रीसेट है 0 पर. ओके, जैसे ही फर्स्ट क्लॉक पल्स आएगा, एज इट इज अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, फ्रॉम द पिक्चर यू कैन सी दैट इट इज अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप. सो जब भी क्लॉक का पॉजिटिव एज आएगा देयर विल बी चेंज इन द आउटपुट ओनली. ओके, सो डी हमने यहाँ पर 0, 0, 0, 0 ऑलरेडी अप्लाई, आउटपुट में 0, 0 माना है इनिशियली. सो व्हाट विल हैपन व्हेन द फर्स्ट एज ऑफ द क्लॉक विल कम. जैसे ही क्लॉक का फर्स्ट एज आएगा, यहां पर अगर 0 है तो यहां क्या होगा, 1 होगा. ओके, सो नाउ जैसे ही फर्स्ट क्लॉक आएगा, ये इसका मतलब है कि बिफोर दिस क्लॉक यहां पर ये 1 है, मतलब इनपुट पर ये 1 होगा. ठीक है, जैसे ही फर्स्ट क्लॉक आएगा, दिस 1 विल ट्रांसफर हियर, दिस 0 विल बी ट्रांसफर्ड हियर, दिस 0 विल बी ट्रांसफर्ड हियर and this 0 will be transferred here. Is it okay? Is it okay? Yes, sir. Yes. तो यानी कि फर्स्ट क्लॉक पल्स के आउटपुट के बाद हमें जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, मतलब ये जो 1 था यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा और ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा. ठीक है, जैसे ही यहाँ अगर 0 है तो यहाँ पर 1 ही होगा. ओके, अब नाउ जैसे ही सेकंड क्लॉक का पॉजिटिव एज आएगा, अभी फिर से शिफ्टिंग होगा. सो यहाँ पर जो 1 था ये फिर से यहाँ आ जाएगा. ओके, नाउ अभी फिर से क्या होगा, जैसे ही नेक्स्ट पल्स आएगा क्लॉक का, दिस 1 विल कम हियर. ओके, लेट मी चेंज द कलर. नाउ दिस 1 विल कम हियर, और यहाँ पर जो पहले से 1 था वो यहाँ आएगा. सो हियर we will get a 1. ये जो 0 था, ये 0 यहाँ आएगा, ये 0 जो यहाँ था ये 0 यहाँ आएगा. अब ये जो 0 है, ये 0 है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 1 होगा. अब फिर जब तीसरा क्लॉक पल्स आएगा तो ये 1 यहाँ पर आकर सेव हो गया. अब जैसे ही तीसरा क्लॉक पल्स आएगा, आफ्टर द थर्ड क्लॉक पल्स यू विल गेट दिस 1 विल ट्रांसफर्ड हियर. नाउ ये जो पहले से यहाँ 1 था वो ये वाला 1 will transferred here. Now this 1 will transferred here, और यहाँ जो पहले 0 था that 0 will be transferred here. ओके, अब यहाँ फिर से जब 0 है तो यहाँ फिर से क्या होगा, 1 ही होगा. ओके, तो इसका मतलब क्या है, ये 1 है, ये जो कि यहाँ ये 1 है. ओके, नाउ अगेन दिस 1 विल कम हियर. नाउ अगेन जैसे ही नेक्स्ट पल्स आएगा, दिस 1 विल ट्रांसफर्ड हियर, और ये जो पहले से 1 था वो यहाँ आएगा.
ये जो 1 है, दिस 1 विल गो हियर, और यहाँ जो ये पहले से 1 है, दिस 1 विल कम हियर। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास जो चार्ट है वो प्रिपेयर होता जाएगा। ये आप लोग देख पा रहे हो, Q3, Q2, Q1 और Q0 का इनिशियल वैल्यू 0 0 ये था। ओके, नेक्स्ट क्लॉक पल्स में आप क्या देख रहे हो, जो यहाँ 0 था वो यहाँ आ गया। ओके, और इनिशियली व्हाट वी कैन सी दैट आफ्टर द फर्स्ट क्लॉक पल्स, पहले क्लॉक पल्स आने के पहले जब क्लॉक पल्स नहीं आया था, वहां पर ये 0 था तो ये 1 था। जो जैसे ही फर्स्ट क्लॉक पल्स आएगा, ये 1 Q3 का आउटपुट हो जाएगा। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो 1 है वो Q3 का आउटपुट हो गया पहले क्लॉक पल्स के बाद। ओके, तो ये इसी तरीके से शिफ्ट होता जाएगा, और 8वें क्लॉक पल्स पे हमें फिर से वही स्टेट मिलेगा जो कि पहले था। ओके, सो दिस इज अ रिंग काउंटर, दिस इज अ ट्विस्टेड रिंग काउंटर। एंड ट्विस्टेड रिंग काउंटर क्यों कह रहे हैं, सिंपली बिकॉज instead of taking the feedback from Q, the feedback is given from the Q bar. Okay, so with n flip-flops there are 2 to the power n states. Okay, and n flip-flops, with n flip-flops the maximum count by the counter is 2 to the power n minus 1. So if we have a total of 5 flip-flops, then we will have 2 into 5, that is 10 states. Okay, और अगर n फ्लिप फ्लॉप है तो मैक्सिमम काउंट जो काउंट करेगा वो कहाँ तक काउंट करेगा, मान लें जैसे यहाँ पर 5 फ्लिप फ्लॉप है, सो वी विल हैव 2 to the power n minus 1, that is 2 to the power 5 minus 1, that is कितना हो जाएगा 2 to the power 5 का वैल्यू 32 minus 1 31. 32, और yes it should be 31. so maximum counting जो है ये 31 तक करेगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास जैसे यहाँ पर कितने फ्लिप फ्लॉप्स है हमारे पास, a total of 4 flip flops are here. so in this case 2 to the power 4 minus 1 मतलब कितना हो गया, 16 minus 1 मतलब कितना हो गया 15. ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैक्सिमम जो यहाँ पर अवेलेबल है वो कितना है 1 1 1 1 1. ओके, सो सर वो जो फ्लिप फ्लॉप बताया अभी, मतलब काउंटर बताया, वो एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद तो डाउन काउंटर की तरह बिहेव करने लगेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो क्या कि यहाँ पर ये फर्स्ट सीक्वेंस था, सेकंड सीक्वेंस मतलब फर्स्ट सीक्वेंस 0 0 0 0 था, सेकंड क्या होगा 1 0 0 0, next will be 1 1 0 0, next will be 1 1 1 0, next will be 1 1 1 1, then अब 1 शिफ्ट होना शुरू होगा, अब 0 आना शुरू होगा यहाँ, so 0 1 1 1, then 0 0 1 1, then 0 0 0 1, then 0 0 0 0. okay, so here you can get this in this way. तो ये डाउन काउंटर इसे हम नहीं कह सकते हैं, तो इसे हम रिंग काउंटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें वापस से वही आउटपुट, उससे थोड़ा सा जो चेंज है आउटपुट थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ओके, सो yes, this is the theoretical part, that with n flip flops input frequency, yes, with n flip flop the input frequency is f, then the output frequency will be f by 2n. ओके, सो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये इनका इस्तेमाल आपको जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने में इसकी मदद मिलेगी। ओके, सो व्हेन काउंटर इज एंटर्ड इनटू अनयूज्ड स्टेट, द काउंटर इज फंक्शनिंग एज ओनली अनयूज्ड स्टेट्स, देन दिस काउंटर इज नोन एज लॉकआउट स्टोरेज काउंटर, लॉकआउट स्टेज काउंटर. In a counter, if a feedback connection is used, the number of possible states will decrease. Okay, so let us see. So this is all about the twisted ring counter. Now we will go through the ring counter. Okay, so in ring counter you can see that
it is nothing but CISO shift register, single input, single output. Okay. So here, in the same way, you can see that in this counter, LSB flip-flop output Q0 is connected to the MSB flip-flop input D3. Okay. So वही same चीज है यहाँ पर भी, one bit is high, only one bit is high and circulates among all the flip-flops. वही चीज जो हमने ट्विस्टर काउंटर में भी देखा. सो फर्स्ट स्टेट ये था. नेक्स्ट स्टेट में जो क्यू बार वाला 1 होगा वो 1 यहाँ आएगा. नाउ दिस 1 विल गेट सर्कुलेटेड. सो 4 स्टेट यहाँ पर दिख रहे हैं और 4 स्टेट यहाँ पर दिख रहे हैं. सो there will be repetition. You can see that there will all the zeros, then this we will have again फिर हमें 0, so we'll have 0 0 0 0 1, then again you can get 1 0 1 0. so ये सर्कुलेट होता रहेगा. फिर इस 4 स्टेट के बाद आप देख रहे हो ये जो स्टेट है लास्ट में 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0, you will again get the same in the output. Okay, so these are the 4 states which we can see over here. So यहाँ पर भी आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे n flip flops, maximum count possible in this counter is 2 to the power n minus 1. Decoding is very easy as there is no any aid of the extra circuit. Okay, so this is the basic things, basic thing which you have to know. The self-starting ring counter. Here you can see that it is the example of a not self-starting ring counter. आप यहाँ पर देखोगे दोनों में डिफरेंस क्या है आपको देख कर पता चल जाएगा. So here what you can see that this is called self-starting. This is called a self-starting ring counter due to its operation. Why? So as initially the outputs are all 0 0, will make Q3 high after the first clock pulse table. Okay, so let us see the table here. So after all zeros we have 1 0 0 0, then 0 1 1. So this one will get circulated here. Now again at the output it is 1 0, this one again it is a 1 0 0. So here in 4-bit ring counter, the used states are 4. So unused states are 2 to the power 4 minus 4, that is 12. Okay. So if clock frequency is F here, the flip-flop outputs frequency is F by N, where N is the number of states. So you can see that in the case of twisted ring counter, the number of states, the frequency was given by F by 2N. Okay, and here it is also known as the AND carry counter. Okay, so you have to go through this theory of the counters. Now I will give you a problem regarding the counter. Okay. Are you able to see the whiteboard? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So if you have some basic idea about the counter, then easily you can solve some of the problems, okay, related to counter. So here there is a question. Here we will have a counter with
So I can draw the figure with the use of this block. So the clock is given. Okay, and here there is the output. The J input is got connected with the Q bar of the output, and the outputs are given as here. Okay, so let me draw it myself. Here there are two outputs which are nothing but Q, and here it is Q bar. Here the negative edge triggered flip-flops are given. So these are the clock, and the J0, K0, K is given as 1, and here also J1, K1 is given as 1. Okay, so here we have Q0, Q0 bar, here Q1 and Q1 bar. Okay, so this is the output. So what you have to find out is the mode of this counter. You have to find out the mode of this counter. Sorry. So can anybody tell me? Okay, one thing I have missed, that this Q is connected with J1. Q not is connected with J1. Yes, anybody? सर मॉड बताना है। Yes. What is the mode of this? सर तो 4 होगा सर ना। 4 होगा। Yes, there you have to tell that what should be the mode. So if I am saying that the set of set of output conditions are 0, 0, 0. Okay, the set of output conditions are 0, 0, 0. In that case, what are the output? So उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप मुझे बताइए। टेबल बनाना पड़ेगा सर, ट्रुथ टेबल। Yes, that is what we have to do. So हम मान रहे हैं इनिशियली कि जो ये आउटपुट्स है वो इनिशियली 0 है, क्योंकि इन दिस पर्टिकुलर सर्किट क्लियर या प्रीसेट ऐसा कोई चीज दिया नहीं गया है। ठीक है, अगर क्लियर या प्रीसेट दिया होता, एक्टिव होता, तब हम इनिशियली उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 0 या 1 मान सकते थे, बट वी आर अज्यूमिंग दैट द आउटपुट्स आर 0, 0, 0 इनिशियली। Okay, so I am assuming that Q0 and Q1 are 0, 0. Okay. Okay, so what we can do here? What will be the next state? How we will find that? जो भी आप लोग सोच रहे हो वो बताओ, क्या कर सकते हैं?
सिंपल सिंपल हमें जानना क्या है कि हर एक टी स्टेट के बाद आउटपुट क्या आ रहा है, तो आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आउटपुट कब सर चेंज जेके करेगा ये बताओ। इनपुट पे। हाँ, इनपुट पर डिपेंड करेगा है। तो अब हमें पता करना होगा कि इनपुट क्या आ रहा है। सो अगर हम मान लें कि Q0 और Q1 का वैल्यू 0 0 है, तो अगले टी स्टेट आने के पहले इनपुट पर क्या क्या वैल्यूज रहेगा ये हमें पता होना होगा। तो इनिशियली हम सो हम यहाँ आउटपुट्स हियर वी कैन राइट Q1 and Q0 because I am writing the here as LSB and here I am writing the MSB. Okay, so in that case I can find out the inputs J and K. So how we can find that? So हमारे पास दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, कौन कौन से? J और एक फ्लिप फ्लॉप 0 है, एक फ्लिप फ्लॉप 1 है। ओके, सो दोनों के लिए हमें J और K का इनपुट लिखना होगा। सो लेट अस हैव J0 and K0 and J1 and K1, ये सारे इनपुट्स हमें पता करने होंगे। बेस्ड अपॉन दैट वी विल गेट द आउटपुट। ओके, सो इनिशियली एट द फर्स्ट क्लॉक पल्स पे हम पहले देखें तो J0 का वैल्यू क्या होगा फर्स्ट कंडीशन में? J0 किससे कनेक्टेड है? Q1 बार से सर। 1 से सर। यस, Q1 से कनेक्टेड। कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q1। यस, तो Q0 क्या है? Q1 क्या है? Q1 का वैल्यू कितना है? 0 सर। 0 है, तो Q1 बार 1 हो जाएगा। होगा 1 होगा, मतलब J0 का वैल्यू 1 होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K0? 1 सर। 1 सर। the time will get over now, so all of you will rejoin again. मुझे सेव करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो ये पूरा मिट जाएगा। ओके, सो आप लोग ये पिक्चर अपनी कॉपी में बनाओ और सॉल्व करो। आई एम रीस्टार्टिंग दी क्लास, रीस्टार्टिंग द सेशन। सभी लोग अपने अपनी कॉपी में ये बनाओ और JK का और J1 K1 का J0 K0 का वैल्यूज लिखो अपने अपनी कॉपी में।